children, a very warm welcome to your social science class with your mentor Aprajita. And children, here we are going to start today Unit 2 Geography of our Social Science Class 6. And let's start the chapter 14 of Geography, Exploring our Solar System. तो आज हम अपने solar system को explore करेंगे. Okay? So here we start. And in this chapter क्या पढ़ने वाले हैं हम? Universe, solar system, our planet, the Earth. Let's start with the universe. क्या है ये universe? Universe is everything. It is made up of matter. किससे बना है universe? Matters. Living things, planets, stars, galaxies, dust, clouds, light, and even time. All are the part of the universe. ये सारी चीजें universe का part. The universe came into being as a result of the Big Bang and continues to get bigger. अब ये जो universe है, universe भी कैसे आया? एक Big Bang के through ये universe form हुआ और ये धीरे धीरे बड़ा होता चला. Fact to know, the branch of science that deals with the study of stars, planets and other heavenly bodies is called astronomy. जो branch science की जो branch stars, planets और दूसरे heavenly bodies के साथ deal करती है उसको कहा जाता है astronomy. उस study को कहा जाता है astronomy. Now, the measuring distance in the space. The celestial bodies are located at huge distance from one another. जो भी celestial bodies होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा distance में होती हैं. The astronomers use light year as the unit of distance in the space. और ये जो distance है space में celestial bodies का, इसको जो astronomers हैं वो कैसे use करते हैं? As light year. Light year as a unit of distance. एक unit जो होता है distance का उसे कहा जाता है light year. Light travels about 3 lakh kilometer in 1 second. एक second में 3 lakh kilometers travel करती है light. The distance that light travels in 1 year makes a light year. ये जो distance जो light travel करती है एक साल में 1 year में उसे कहा जाता है light. Stars. Stars are those heavenly bodies which are hot, made up of gases, have their own light and heat. Alpha Centauri is the nearest star after the sun. अब देखिए stars क्या होते हैं? वो heavenly bodies होते हैं जो कि बहुत hot हैं. They are very hot और gases से बने हुए होते हैं and उनका अपना light और heat होता है. Alpha Centauri is the nearest star after the sun. और sun के बाद जो सबसे nearest star है वो कौन सा है? Alpha Centauri. Constellations. A group of stars forming a pattern is called a constellation. जब हम आसमान में देखते हैं तो वहाँ कहीं कहीं हमें stars का group दिखता है. बहुत सारे stars एक जगह पे होते हैं. तो ये जो group होता है stars का, ये क्या form करते हैं? Is called a constellation. One such famous group is the Saptarishi or Big Bear. अगर आप देखेंगे कभी आसमान में आप it's a clear sky and the stars are visible, तो आपको दिखेगा there is a Saptarishi, 7 stars का group दिखता है. That is known as Saptarishi or Big Bear. This constellation can be used to ascertain directions at night. Its top 2 stars point to the pole star. अब देखिए ये है Saptarishi. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसकी जो top 2 stars हैं वो किसकी तरफ point करते हैं? Pole star. The pole star or the north star is the bright star which always shines to the north direction. तो ये direction भी बताते हैं कि उसके जो सप्तऋषि के जो top 2 stars हैं वो हमेशा pole star की तरफ point करते हैं. तो it marks that is the north direction. Pole star को north star भी कहा जाता है. Galaxy. A group of millions of stars and other bodies is known as galaxy. ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स का जो ग्रुप है और दूसरे बॉडीज का है जो ग्रुप उसे कहा जाता है गैलेक्सी.
Our Earth is a part of galaxy called the Milky Way or आकाश गंगा. हमारा जो Earth है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसे कहा जाता है मिल्की वे या आकाश गंगा. It exists beyond the blue sky that you see every day. वो blue sky के नीचे exist करता है जिसे कि हम daily देखते हैं. There are millions of galaxies in the universe. Scientists name them differently. Galaxies have three types of shapes: spiral, elliptical shapes. These are the shapes, S-H-A-P-E-S. So galaxies have three types of shapes, that is spiral, elliptical or irregular. Our galaxy is spiral. हमारा जो galaxy है वो spiral shape. देखिए, this is spiral. The nearby galaxy of the Milky Way is the Andromeda. Now comes the solar system. The solar system means the family of the sun and its 8 planets. Solar system का मतलब क्या है? Sun की family और उसके 8 जो planets. The sun is a star which is nearest to us. Earth से nearest कौन सा star है? Sun. The Earth, a planet, goes round the sun. जो Earth है, एक planet है Earth और वो sun के चारों तरफ घूमती है. Like the Earth, there are 7 more planets which go round the sun. और अर्थ की ही तरह 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं. In order of increasing distance from the sun, these 8 planets are. अब इनकी सीरीज क्या है देखिए किस ऑर्डर में है ये. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. The path is called the orbit. इस पे ये घूमते हैं वो पाथ, उस पाथ को कहते हैं orbit. This is the sun. The sun is a star. Sun एक star है. It is at the center of the solar system. Solar system के बिल्कुल बीच में है ये sun. The diameter of the sun is about 109 times that of the earth. Earth से 109 times ज़्यादा इसका diameter होगा sun का. It is the main source of heat and light on the earth. Earth पे जितनी भी heat मिलती है और लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन. The average distance of the sun is about 15 crore kilometer. जो average distance है अर्थ से सन का वो 15 crore kilometer. The sunlight takes over 8 minutes to reach the earth. सन से अर्थ तक जो sunlight आती है वो कितने मिनट्स लेती है? 8 minutes लेती है अर्थ तक पहुंचने. The temperature at its surface is about 6,000 degrees centigrade, while it is about 1 crore 50 lakh degrees centigrade at its center. Now, fact to know, until 2006, the Pluto was also considered, जो Pluto था, was also considered to be a planet. Pluto भी एक planet था, but now it has been downgraded in view of its massive distance from the earth. अब इतना ज़्यादा distance है Pluto का sun से कि वो दिखाई देना बंद हो गया. So now it's not being counted in the planet. The planets have no light of their own. Planets की अपनी कोई light नहीं है. They reflect the light of the sun. किसके light को reflect करते हैं? Sun. All planets are spherical in shape and revolve around the sun from west to east, except Venus and Uranus. सारे planets spherical होते हैं, उनका spherical shape होता है और वो sun के चारों तरफ revolve करते हैं west से east की तरफ. Only Venus और Uranus नहीं. The planets also rotate on their axis. sun के चारों तरफ तो घूमते ही हैं और वो अपने axis पे भी rotate करते हैं. Mercury, Venus, Earth and Mars are made up of rocks and are called terrestrial planets. जो Mercury, Venus, Earth और Mars हैं, ये किससे बने हैं? रॉक से बने हुए हैं और इनको terrestrial planets भी कहा जाता है. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are made of gases and are called gas giants. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are gas giants. Our planet, the Earth. अब हम पढ़ेंगे अपने planet के बारे में जिसमें हम रहते हैं जो कि Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. तीसरा nearest planet है Sun से and the fifth largest of all planets in the solar system.
सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. It is a unique planet because this is the only planet known to have life because it receives the just right amount of sunlight and has air and water. अब ये जो अर्थ है यही एक ओनली प्लैनेट है जिसपे की लाइफ है. एंड ये लाइफ क्यों है? क्योंकि इस पे सही अमाउंट का सनलाइट मिलता है इसको और एयर भी है, वाटर भी है. The earth revolves around the sun once in 365 days or in a year, and it takes a day or 24 hours to rotate on its axis. अर्थ अपने एक्सिस पे तो जो घूमता है उसको 24 आवर्स लग जाते हैं अपने एक्सिस को कंप्लीट करने के लिए. और जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है once in 365 days or in a year, takes a year, bulging at the equator and is flattened at the poles. इक्वेटर के पास तो इसका बल्ज आता है अर्थ का और जो पोल्स पे ये फ्लैटन है, पोल्स पे फ्लैटन. Its equatorial diameter is about 44 kilometer more than the polar diameter. The earth from the outer space appears blue because of a large amount of water, about 3/4 on its surface. अब जो अर्थ है आउटर स्पेस से कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है. क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारा पानी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट और द वाटरी प्लैनेट. द सैटेलाइट्स, अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज द सैटेलाइट. और जो बॉडी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है उसे कहा जाता है सैटेलाइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड मैन-मेड. दो तरह के सैटेलाइट हैं, नेचुरल है और मैन-मेड. The moon is a natural satellite of the earth. Moon जो है वो अर्थ का natural satellite. The man-made satellites are launched by us in the space. अब man-made satellites जो है वो space में भेजे गए हैं, like the INSAT-1 satellite. These help in communication, weather forecasting, broadcasting, etc. जो satellites, man-made satellites भेजे जाते हैं space में, उनसे क्या हेल्प मिलती है? कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग. नाउ कम्स द मून. द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. इट्स रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस द अर्थ इन अबाउट 1.25 सेकेंड. अब इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? 1 या 1/4 सेकेंड. इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम us. क्या? मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर. फेजेस ऑफ द मून. मून के अलग अलग फेजेस हैं. द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. मून रिवॉल्व करता है, किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ, और अपने एक्सिस पे भी घूमता है. In exactly the same time, 27.3 days. Exactly same time में वो घूमता है. कितने दिन में? 27.3 days. We always see the same side of the moon. It has no atmosphere and has craters. हम हमेशा एक ही साइड देखते हैं मून का, और मून पे न तो एटमॉस्फेयर है और उसमें क्या है? क्रेटर्स. We see the changing shape of the moon. हम मून के अलग अलग शेप्स चेंज होते हुए देखते हैं ना. आप लोग देखते हैं ना, when you see the sky, और उसमें वहाँ पे मून देखते हैं, कभी वो फुल होता है, फिर वो धीरे धीरे हाफ होता जाता है, उसके अलग अलग शेप्स बनती हैं. This event, first we see the thin crescent, the full quarter, followed by the gibbous and finally the full moon. अभी आपको जैसे बताया क्रेसेंट सा बिल्कुल पतला सा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर फुल मून बनता है. दिस इवेंट रिपीटेड इन रिवर्स इन द न्यू मून. न्यू मून जब होता है तो ये इसका रिपीटेशन उल्टा होता है. फुल से वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, लास्ट में क्रेसेंट पे. दिस इवेंट ऑफ चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. और ये जो शेप्स चेंज होते हैं मून के, इसे कहा जाता है फेजेस ऑफ मून. When its shape appears to change from new moon Amavasya to full moon Purnima, it is said to wax.
न्यू मून को क्या कहा जाता है? अमावस्या, और फुल मून को कहते हैं पूर्णिमा. And when its shape appears to decrease from full moon to new moon, it is said to wane. और full moon means पूर्णिमा, जब पूरा चांद होता है उससे जब वो न्यू मून पे आता है तो उसे कहा जाता है wane. We cannot see the moon on the new moon night. जब न्यू मून नाइट होता है तो उस टाइम मून नहीं दिखता है. See, these are the different phases of moon. Fact to know: Neil Armstrong and Edwin Aldrin, the American astronauts, were the first to set foot on the moon in 1969. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे सबसे पहले उन्होंने मून पे कदम रखा. Asteroids are small planet-like bodies which revolve around the sun. छोटे छोटे प्लैनेट लाइक बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स. They are chiefly found between the orbits of the Jupiter and Mars. जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट्स के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स मिल जाते हैं. They are believed to be the pieces of some planets which exploded soon after its birth. ऐसा माना जाता है कि कोई प्लैनेट जैसे ही आया और उसका एक्सप्लोजन हो गया तो उसके जो पार्ट्स हैं वो घूमते हैं चारों तरफ ऑर्बिट में. The largest asteroid is the Ceres. जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है वो कौन सा है? Ceres. Meteors and meteorites. Meteorites are small pieces of solid mass which revolves around the sun. Meteoroids क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस होते हैं सॉलिड मास के जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं. Sometimes they enter the Earth's atmosphere at a great speed. कभी कभी ये जो meteoroids होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं बहुत स्पीड से. Due to friction with the atmosphere, they start burning and disappear as dust and gas called meteors or shooting stars. और जब वो एंटर करते हैं इतनी स्पीड से एटमॉस्फेयर के अंदर तो जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ तो वो बर्न करना शुरू कर देते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं एज डस्ट और उसको कहा जाता है मीटियोर्स और शूटिंग स्टार. Sometimes a meteor is not completely burned and it strikes the earth's surface and forms a crater. अब क्या होता है कभी कभी कोई मीटियोर जो है वो जब फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ तो वो बर्न पूरा नहीं हो पाता है और वो जो अनबर्न पीस है वो आके अर्थ को हिट करता है, वहां पे एक क्रेटर बन जाता है, गड्ढा सा. दिस पीस इज कॉल्ड अ मीटियोरॉइड. तो इस पीस को क्या कहा जाता है? मीटियोरॉइड. वी कैन सी अ मीटियोरॉइड क्रेटर इन एरिजोना स्टेट इन यूएसए में मीटियोरॉइड से जो क्रेटर बना है वो देखा जा सकता है एरिजोना में. कॉमेट. The comets too revolve round the sun. ये comets भी sun के चारों तरफ घूमते हैं, but their orbit is very elongated. A comet is a huge lump of snow and rocky dust. ये comet जो होता है बहुत बड़ा एक lump होता है जिसका snow का और rocky dust. When it reaches near the sun, it starts to glow and develops a long shining tail. जैसे ये sun के पास पहुंचता है ये लंप ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट तो ये ग्लो करने लगती है, शाइन करने लगती है और एक लंबी सी शाइनिंग सी टेल बन जाती है. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हैलीज कॉमेट व्हिच अपीयर्स एवरी 76 इयर्स. और ये देखिए ये है हैलीज कॉमेट. देखिए एकदम ग्लोइंग सी टेल बन जाती है ना पूरी लंबी सी. सो जो फेमस कॉमेट है वो है हैलीज कॉमेट जो कि हर 76 इयर्स में अपीयर होता है. इट विल बी स्पॉटेड इन 2062. अभी 24 चल रहा है, 2062 में जाके हैलीज कॉमेट फिर से देखिए. Fine children, now let's do some important facts. Read out the important facts which we have learned in this chapter, which we have read in this chapter. The universe comprises all galaxies formed by millions of stars, planets and other celestial bodies. Distance in the space is measured by light years. A constellation is a group of stars in a particular shape. The Milky Way is our parent galaxy in which our solar system is located. हमारा solar system Milky Way में located. The solar system comprises of the sun, its 8 planets and their satellites. Our Earth is a unique planet because it supports
लाइफ, हमारे अर्थ पे लाइफ है, इसलिए वो एक यूनिक प्लैनेट है. Asteroids, meteors and comets are small bodies revolving around the sun. Fine, children? Now we start with the exercise here. Objective type question. Take the right option. The pole star always shines in the dash direction. कौन सा डायरेक्शन में शाइन करता है पोल स्टार? साउथ, नॉर्थ, वेस्ट. इट शाइन्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे, आकाशगंगा, बोथ ऑफ दीज, मिल्की वे और आकाशगंगा दोनों कहा जाता है. द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन इज अबाउट 13 crore kilometer, 14 crore kilometer, 15 crore kilometer. It's 15 crore kilometer. Saptarishi is a group of dash stars. कितने stars का group है सप्तऋषि? 7, 8, 9. It's a group of 7 stars. Sapt means 7. A comet is a huge lump of dash, snow, rocky dust, both of these. It's a lump of both of these, snow and rocky dust. Now fill in the blanks. The universe came into being as a result of the universe कैसे आया? क्या हुआ था? Big Bang. As a result of the Big Bang. Okay, children. Distance in the space is measured by. It is measured by light year. It's measured by light year. When the moon changes its shape from new moon to full moon, जब new moon से full moon में change होता है moon, तो उसे क्या कहा जाता है? It is set to wax. It is set to wax. The dash comet appears after every 76 years. कौन सा comet है जो हर 76 years के बाद appear होता है? It's the Halley's comet. Halley. Halley's comet. Okay? So here we end up with our lesson, and stay tuned for the new video, children. We'll meet again with a new chapter, something new, something more interesting to know. Till then, keep learning and stay happy. Bye.